मैं घर से जैकेट पहन के निकला, ठीक है, नीचे आने तक पसीना पसीना हो गया लिफ्ट में। इसलिए तो मैं ऐसे निकला है, बोला वाट लगने वाला है। ठीक है, देखते हैं आगे जाके, शायद तो आगे जब भी ये क्या बोलते हैं फाउंटेन वगैरह पास होएगा ना, फाउंटेन की उससे पहले मेरा रोड के कहाँ पे है फाउंटेन? देख वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ना, मैं गोरेगांव से आगे गया नहीं। नहीं थाना है, थाना भी है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। हाँ, तो थाना से गोरेगंज रोड से जहाँ पे मीट होता है। अच्छा, वो ओके। वहाँ पे एक नाम का होटल है, फाउंटेन नाम का होटल है, कोई फाउंटेन नहीं होता। Hello everyone and good morning. So today I am riding to this place called Hotel Ahura, which is about 130 kilometers to the north of Mumbai. So as you can see, I am riding with my friend Pratik today, who is on his Yamaha FZ15 and I am on my FZ25 as always. This entire ride was his idea and I personally do not have any clue as to where we are going and what exactly we will be doing there. All I know is it's a breakfast ride, so we will be driving to the hotel, have a good breakfast and then drive back to Mumbai. We have actually woken up at around 5 AM today and we started at around 6 AM in the hopes of avoiding any traffic in Mumbai before we hit the highway. But as you can see, we didn't quite manage to do that. Now it's 6 AM or 6:30 AM on a Sunday morning. And for the life of me, I cannot figure out why there are so many vehicles out in the streets already. I guess some things will never change. So it's about few kilometers down the road at this point, and in the meantime, I managed to lose track of Pratik in the traffic. Instead of stopping by the side of the road and trying to call him, what I have done is shared my location on WhatsApp and asked him to share his location too. And I've also decided on a common spot up ahead. So whoever reaches that spot first will wait there for the other guy to catch up to him. In this case, that spot is the Fountain Hotel, the hotel about which we were talking earlier. So I think he's about 700 meters away. So let's go up and meet. At this point, his location wasn't updating, so I thought I'll give him a call. कहाँ पे है रे? मैकडॉनल्ड्स का बहुत बड़ा बोर्ड है। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स है क्या? देखता हूँ मैं। हाँ, मैकडॉनल्ड्स का बहुत बड़ा बोर्ड है, वहाँ पे दोहरा रोड लेफ्ट साइड में आ जाता। ठीक है। So finally caught up to Pratik. We decided to take a short break and I filled up some petrol in my bike and we also drank some water ourselves. Now, even though my bike can easily accelerate and get into that gap, I always try to avoid this as much as possible. It's a matter of having a little patience and a gap will eventually open where you can overtake them safely. Now, some of you guys might take this the wrong way, but I have lived most of my life in Maharashtra and the roads here are not something that we should be proud about. I mean, most of the roads you cannot ride a bike confidently. A lot of the roads here, including state and national highways, are filled with potholes, untimely speed breakers and a lot of patchwork.
Having said that, I have to say that this particular road, the one that I am currently riding on, is amongst the best I have seen. While we were riding, we came across a lot of other motorcyclists on the same road. Little did we know that most of them are actually going to the same place that we are. आगे यहाँ थोड़ा यहाँ से थोड़ा ही आ गया ना। नहीं, मैंने घर से देखा था तो 127 किलोमीटर दिखा रहा था। 105 है। क्या मज़ा आया यार बीच में, लेकिन बहुत सारा ट्रक पता नहीं इतना सारा ट्रक आया कहाँ से। पता नहीं लास्ट टाइम इतना नहीं मिला था हम लोग को। ये ठंड लग रहा है भाई, पता नहीं मेरे को यहाँ पे बहुत ठंडी लग रहा है। मतलब मैं रुकने वाला था मास्क पहनने के लिए, पूरा जाम हो गया था। 22 किलोमीटर और एक अच्छा मैं ग्लव्स पहन के आया। तो लगा ना उल्टा मोबाइल लगा ना, सीधे पे जाना है, सीधा ही जाना है बस। जहाँ पे रुकना है ना वहाँ पे पहले कुछ ढाबा वगैरह। कितना किलोमीटर बताया उसने? 22 किलोमीटर ये है ना 105 है, 135 पे रुक जाने का। 105 हो गया ना। अच्छा ओके, मैंने वहाँ से घर से लगाया था। 22 किलोमीटर्स ना, 22 किलोमीटर ना। 195 दिखा रहा है, मतलब मेरा मैंने पहले कब चालू किया रहेगा? 270 के आसपास उठना है। किलोमीटर के हिसाब से उठने का इसमें आइडिया क्या है भाई? यही तो टेक्निक है। ध्यान में नहीं आया था मुझे। और एक है पोटैटो वाला बेस वाला कुछ है, वो बहुत अच्छा है। माँ कसम, रेड 800 800 सीसी, 250 सीसी, 150 सीसी, सीधा 800 सीसी। सबसे गरीब साला बाइक मेरी हुई है। हाँ आज पहली बार 107 ब्लॉक किया है। 107। अबे एक दो जगह पे तो मैं 110 115 पे टर्न होल्ड कर रहा हूँ। मैं खुद शॉक कि क्या चल रहा है।
1 hour later. A tiny correction, 1 hour and a big breakfast later. ये जो चला यहाँ पे रहा है वो लीगली अलाउड नहीं है, मतलब यू हैव अ सर्टेन टाइम, मतलब अगर दोस्त ने गाड़ी कहीं और खरीदा रहेगा तो चला यहाँ पे रहा है तो को ट्रांसफर करना पड़ता है हमें। बराबर, बट अगर वो स्टेट अलग रहेगा तब भी हाँ MS-20 की जरूरत नहीं पड़ती उसको, रोड टैक्स है मतलब गवर्नमेंट, एटलीस्ट मेरे को तो यही लगता है अकॉर्डिंग टू मेरा लॉजिक, पता नहीं। At this point we are very near to Mumbai, so we decide to have a break and drink some water. And Pratik has to actually go to one of his relatives' house in Borivali. Since it's already quite late at this point, we decide to split up and go on our separate ways. I head home while he goes to his relatives' house. From here it's just a pretty straightforward ride along the Eastern Express Highway to my home in Chennai.